Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start organic chemistry. It is our first lecture. We'll start the chapter number 15, that is organic compound. In this lecture we will study about introduction to organic chemistry, sources of organic compound, coal, characteristics of organic compound. Now, introduction to organic chemistry. First, we will see its definition. What is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of compound of carbon, hydrogen and their derivatives. Before going to our next topic, मैं ये चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करूँ. इन अर्लियर टाइम जो केमिकल कंपाउंड्स थे उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था. अब वो जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज of vegetables, animals origin. और जो कंपाउंड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे हम उनको कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. एंड दोज कंपाउंड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें मिनरल्स से मिलते थे उनको हम क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंस कार्बन इज द बेसिक नीड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, carbon is the main constituent of organic compound. Chemistry of carbon is called organic chemistry. लेकिन हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं although they contain carbon but they are not studied in organic chemistry. For example, carbon monoxide, carbon dioxide, carbon disulfide, carbonates and bicarbonates, cyanides, etc. These are the compounds that containing carbon, but they are not studied in organic chemistry. They are studied in inorganic chemistry. The reason is that because of their properties. इनकी जो properties हैं वो organic compounds से different. अब properties में nature of bonding, origin, solubility, combustion, etc. For example, carbon dioxide न खुद जलती है और ना ही जलने में हेल्प करती है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंबस्टिबल है. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देयर आर फोर मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्ट वन इज फॉसिल रिमेन्स, सेकंड वन आर प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, थर्ड वन आर पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, एंड फोर्थ वन आर fermentation. First one is fossil remains. Fossil remains include coal, petroleum or oil, crude oil, and third one is natural gas. We'll discuss this in detail. First one is petroleum or crude oil. This is black, thick, sticky liquids that seep out of the ground. Petroleum is a complex mixture of hydrocarbons. The word petroleum is derived from two words, petra and oleum. Petra mean rocks and oleum mean oil. Second one are coal. Coal is the major source of organic compound. It yields coke, coal tar on destructive distillation. And from coal tar, more than 200 organic compounds are directly isolated by fractional distillation. So third source is natural gas. Natural gas is also a mixture of low boiling point hydrocarbons, and the major portion of natural gas contain methane, that is about 25%. Beside methane, natural gas contain ethane, propane,
ब्यूटेन एट्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, चाहे हमारे पास कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, ऑल दीज आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस में लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं स्पेशली फ्रॉम C1 टू C4। पेट्रोलियम में C5 टू C11 तक होते हैं। कोल में अलॉट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसमें सिर्फ अल्केन्स नहीं होते, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। सो द नेक्स्ट सोर्स इज plants and natural product chemistry. Many organic compounds are obtained from plants and animals. For example, carbohydrates like cellulose है, starch है, sugar है, proteins हैं, wool है, casein है, fats and oils हैं, alkaloids हैं, इसकी एग्जाम्पल क्विनीन है, मॉर्फिन है, स्ट्रेचनिन है, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स, परफ्यूम, फ्लेवर एट्सेट्रा। ऑल दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पिक्चर में सिनकोना एक प्लांट्स, अभी जो सिनकोना प्लांट्स है इसके लीव्स से आप बना सकते हैं क्विनीन, दैट इज यूज्ड एज द ट्रीटमेंट फॉर मलेरियल पेशेंट। Third source is fermentation. What is fermentation? Production of chemical by the action of microorganisms. In fermentation, we produced new chemicals or we produce new organic compound from starting material by using different microorganism. For example, we produced alcohol, acid, vitamins and antibiotics. For the production of alcohol, we use sugar. From sugar we can obtain starch by using yeast and other enzymes. हम इससे बनाते हैं अल्कोहल्स। एक्चुअली होता यह है कि हम स्टार्च लेते हैं, स्टार्च एंजाइम एक्ट करता है, यीस्ट दैट इज जाइमेज, 3 एंजाइम एक्ट करते हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज और लाइएज। ये एंजाइम जो है इसमें से फिर हम क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं, साथ में अल्कोहल बनती है। फोर्थ वन इज पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अब अलॉट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन synthesized in laboratory from petroleum and its product। अब होता ये कि ये जो टारगेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट से सुपीरियर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिंथेटिक डाइज है वो नेचुरल डाइज से कई दर्जे बेहतर है। अब सिंथेटिक प्रोडक्ट की हमारे पास एग्जांपल हैं, ईथर है, मर्क्यूरोक्रोम है, मेडिसिन दैट आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स, एस्पिरिन है, सल्फर ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी लाइफ है उसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अभी जो सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये मोर देन 2, 3, 4 स्टेप्स में होती। अब इसमें हम एक स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं और इससे हम टारगेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर जो सिंथेसिस है वो स्टार्टिंग मटेरियल से टारगेटेड प्रोडक्ट बने तब उसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर हम जो टारगेटेड प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर रहे हैं वो बजाय स्टार्टिंग मटेरियल से किसी बाय प्रोडक्ट से कर दें तो उसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर बना रहे हैं तो जो पेपर है बेसिकली ये बनता है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल वुड, स्ट्रॉज एट्सेट्रा। अगर हम इस पेपर को वुड, स्ट्रॉज या इसके स्टार्टिंग मटेरियल से बनाएंगे तब ये होगा टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर हम इसी पेपर को बजाय इसके स्टार्टिंग मटेरियल से, कोई पुराना पेपर हमारे पास पड़ा है, हम उसकी रिसाइकलिंग कर दें, जो रद्दी पेपर है उसकी रिसाइकलिंग से हम पेपर बनाएं, तब इसको हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस। सो नेक्स्ट इज अबाउट कोल। अभी हमने कहा था कि कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब कोल की हम दो तरह से डिस्टिलेशन कर सकते हैं, एक हम इसकी कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दूसरी हम कहते हैं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से
हम बना सकते हैं क्रूड कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल टार, कोक एंड कार्बन गैस। डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की एक एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द separation of component of mixture depending on their boiling point. For example, we have a mixture of water and ethyl alcohol. The boiling point of water is 100 degrees Celsius and that of ethyl alcohol is 69.5 or nearly 70 degrees Celsius. If we heat the mixture containing ethyl alcohol and water at 70 degrees Celsius, ethyl alcohol will boil. इथाइल अल्कोहल बॉयल करना स्टार्ट करेगी, वाटर बॉयल नहीं करेगा। तो इथाइल अल्कोहल बॉयल करेगी, उसके वेपर्स बनेंगे, उनको हम कंडेंस कर लेंगे। सो इन दिस वे बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करके हमने इथाइल अल्कोहल को वाटर सेपरेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल वी कैन ऑब्टेन बेंजोल, टोलिन, xylene, naphthalene, phenols and many other hydrocarbons. Next one is the characteristics of organic compound. What are the main characteristics of organic compound? The first one is composition. As we all know that carbon is the main constituent of organic compound. And the second one is combustion. All the organic compounds, especially having high percentage of carbon, are highly combustible. Third one is melting and boiling point. Organic compounds generally have low melting and boiling points due to weak bonding. Fourth one is solubility. Since they are covalent in nature, so polar organic compound might be soluble in water, but the non-polar organic compounds are insoluble in water and soluble in organic solvent like alcohol, benzene, ether, etc. And the next property is stability. कुछ थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली कंबस्टिबल होते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्योंकि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, सो दे आर generally decompose at high temperature into simpler substance. And sixth one is electrical conductivity. We know that for conductance there should be presence of free electrons or free ions. Conductance के लिए या तो free electrons present हो या free ions present हो। So organic compounds के पास ना ही free electrons होते हैं ना ही free ions होते हैं, so they are poor conductor of electricity both in fused state and in solution form. And seventh source is seventh character source. हमने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है। इनके तीन मेन सोर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसल फ्यूल्स। ये मेन सोर्स इनके यही तीन। एंड द लास्ट characteristics of organic compound is rate of reaction. Usually the organic compounds have slow rate of reaction due to molecular in nature. So ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।